हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी क्षेत्र। कैट का एग्जाम आने वाला है, सिर्फ 3 ही हफ्ते बचे हैं। सो नाउ आई एम हियर टू गिव यू सम टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर कैट एग्जाम। अभी तक आप सिलेबस कर चुके हैं ऑलरेडी। यू हैव परफेक्टेड योर बेसिक्स, सो नाउ ओनली 3 वीक्स टू गो फॉर द कैट एग्जाम एंड यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिलेबस ऑफ वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट, DI, LR. So now you need to ensure a high score in each of the 3 sections because there is a CAT sectional cutoff score that gets you into the shortlist. Partition your CAT planning timing depending upon your qualities and shortcomings. Now that you are familiar with the syllabus and you have covered all the basics, so now recognize your strong and weak sections. This empowers you to see how much time needs to be assigned to each section and each topic. So now just focus your time and energy on the areas that you're not comfortable. और I can say अब तक जितना भी आप कर चुके हैं हम उसी को और स्ट्रॉन्ग करें अपने परसेंटाइल को इंक्रीज करने के लिए. So as there are some questions, particularly in data interpretation, that needs a lot of calculation effort. So utilize this time to perfect this area. Practice calculation based questions regularly and also practice questions from LR, DI and RC that demands a lot of practice. क्योंकि यहाँ पे अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होएगी तो ही हम उन क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. Practice is the key to perfection. So reading through a few chapters and questions does not suffice for a good score in the CAT exam. Practice as much as possible to perfect your weak subjects. This will help you stay confident when you start attempting the mock tests. Now, this is the time when we have to increase our efficiency by taking the mock test. So as you have completed the CAT syllabus, it is advisable to attempt as many mocks as possible with time limitations. The ultimate purpose of the mock test is to learn how to distribute time wisely during the exam between sections and questions. It will give you a tentative idea about how well you can score. Mock tests are not for practicing more questions, but they help you fine tune the timings during the exam. So take at least one mock on alternate day towards the CAT exam. Analyze it properly to identify your strengths and weaknesses and use it to improve your test taking skills. So now it's highly advisable कि आप लोग ऑन ऑल्टरनेट डे एक मॉक टेस्ट दें, उस मॉक को एनालाइज करें एंड अगेन चेक करें कि हमारी क्या वीकनेस है, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, उसे हमें इम्प्रूव करना है टाइमली, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है. सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के सिर्फ फोकस करें अपने एग्जाम के ऊपर. Now, why it is important to solve CAT previous year papers? All the CAT 2022 aspirants are advised to solve the CAT previous year's papers for better preparation of the exam. Solving the papers will definitely help you in the upcoming exam. By this, you can have some useful insight into your performance in the CAT exam and you can reshape your exam strategy according to that. It will give an idea about the time management in the exam and topics that need more improvement for the exam. So once you are done solving the previous year paper, हम mock test देंगे, उसे solve करेंगे और अपने percentile को increase करने के लिए efforts करेंगे. So solving the previous year papers is very very important क्योंकि it will give an exact idea कि CAT में questions कैसे आते हैं. Now the time management plan for CAT exam day. Start with scanning through the question paper to judge the level of the exam and the questions. आपने क्या करना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन पहले एग्जाम को स्कैन करें. जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगता है उसे सॉल्व करें. देन मूव टू मीडियम लेवल, टाइम बचेगा. देन मूव टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस. डिफिकल्ट मींस विच विल टेक टाइम टू सॉल्व. डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि हमें नहीं आता या पता नहीं कहां से आ गया, थ्योरेटिकल है. नो, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज डिफिकल्ट. For QA and VA, start with solving the easiest questions first. Extremely lengthy or difficult questions must be left for attempting only when you're left with time to do them, because this is not the time to try and attempt unfamiliar questions. Rest of the questions that are neither difficult nor easy be marked for review. After scanning the entire section, attempt the marked questions.
This is to ensure that no easy question is left out and that time is not being wasted on extremely difficult questions. So this is highly advisable कि questions को mark करके we should attempt all the easy questions and then move to the medium or difficult level questions. Now each section is allotted 40 minutes. At the same time, 2 minutes is the average time that can be spent on each question. Strictly stick to the time assigned for each question. If the time exceeds more than that, then it is sometimes wiser to leave the question and move to the next. मतलब हमें एग्जाम में जिद नहीं करनी कि इसको मैं सॉल्व करके ही मानूंगा. नो, यहाँ पे जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतनी अच्छी आपकी परसेंटाइल आएगी. सो कोई भी क्वेश्चन या सेट हम स्टार्ट कर चुके हैं, वी फील कि नहीं हो रहा, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. See which section is the most comfortable for you to solve and are less time consuming. Do not hesitate to leave a question out of a set of 4 questions if that consumes a lot of time. Do not think that if they have picked up a set, you must attempt all the questions from that set. This is advisable for reading comprehensions and for LRDI sets. कभी कभी हम सेट को स्टार्ट तो कर देते हैं. लेट्स से कि 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 हमारे सॉल्व हो गए, 1 क्वेश्चन इज टाइम कंज्यूमिंग, हमारे से नहीं हो रहा, देन जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट आरसी, टू द नेक्स्ट LRDI सेट टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस देयर. Set an exit time for the questions. This means that if you have 1.5 minutes to solve one question, devote 1 minute and see if you will be able to solve the question or not. If the answer is no, then feel free to move to the next question. This makes sure that you are not wasting your time on any one question. Solving a difficult question and an easier question fetches you the same marks. So invest your time in solving easier questions first. यहाँ पे कोई चेक करने नहीं आ रहा कि मिस्टर ABC ने डिफिकल्ट क्वेश्चन करा है, इजी क्वेश्चन करा है. नो, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट. आपने कितने क्वेश्चन मैक्सिमम सही करे हैं, उसी के अकॉर्डिंग यू विल गेट द मार्क्स एंड यू विल स्कोर मोर एंड मोर परसेंटाइल. Many examinees have their favorite question types, but this should not limit them and tempt them to spend endless time proving themselves. Tita, type in the response questions tend to be time consuming at times. There are lesser probabilities of getting the answers right in this section. So take this section towards the end so that your time is not wasted. हमें attempt सारे करने टीटा क्वेश्चन, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना. एंड में जाके हम उसके आंसर पुट करेंगे एंड यू विल गेट द मोर स्कोर. Save time for revision. After completing the test, revise the answers to find out if there are any mistakes. So let's say 40 minutes में से 5 minutes हम डिवोट करेंगे सेक्शन को स्कैन करने में, नेक्स्ट 30 मिनट्स उनको सॉल्व करने में एंड लास्ट के 5 मिनट उनको रिवाइज करने में, सो डैट बाय चांस हमने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है, कोई भी चीज है, तो उसे हम ठीक करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, find your own strategies as they become more effective for you individually. It should never be like this. किसी ने कहा, वैभव सर ने कहा, किसी ने कहा कि हमें पहले ये चीज करनी चाहिए, हमें ये सेट नहीं छेड़ना चाहिए. नो, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है which will be more effective for you in the exam. So उसके according you have to work hard. Now this coming 21 days is going to give you the admission to your dream college, to your aim college. So उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू यूटिलाइज दिस 21 days. अब टाइम आ गया है कि हम सब कुछ भूल के सारा टाइम डिवोट करें कैट के एग्जाम को. So for any more difficulties, on any more doubts, you can post your comment in the comment box. So keep studying and learning. गाइडेंस मेरी, मेहनत आपकी.